Uh, Hello, good evening, everyone. Thank you very much, Danya, for this wonderful introduction. Congratulations, Rajaraman and Abhishek, for wonderful transformation. I hope you will be enjoying your new version of yourself. Myself, Dr. Avinash Gandhi, I'm a practicing pediatrician in Ahmedabad, and as Danya said, now I'm also a part of this wellness quotient community. So, before starting my presentation, let me just share my screen. Okay, what I'm going to talk about is the root of all ailments, and it is your gut story. I'm sure if you have listened Rajaraman's interview, there was a word which came inflammation. Again, in BOBAV, there was a word which came inflammation, which Arvind talked about. So, what is this inflammation and how it is affecting us? That we will see. So before starting my talk, I just want you people to write, okay, what is the single most concern of your health? Yeah, what is the lifestyle diseases which you are concerned with, for which you are attending this session? Please write in the chat box. Okay, stress, thyroid, obesity, kids immunity, back pain, acidity, fatigue. Yes, obesity. I think obesity is at number one score. Autoimmune, inflammation, gut issues. Yes, very correct. So व्हाट इफ आई से कि ये सारी बीमारी अलग अलग बीमारी नहीं है. आई बीइंग इनटू मेडिकल प्रैक्टिस सिंस लास्ट 2 decades, 10 years of study and 10 years of practice, we have always been taught कि डाइजेस्टिव सिस्टम का इश्यू अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का इश्यू अलग है, ओबेसिटी का इश्यू अलग है, एंडोक्राइन सिस्टम का इश्यू अलग है. व्हाट इफ आई से कि सारे प्रॉब्लम एक ही चीज से होते हैं. ठीक है. सो आई हैव लिस्टेड द कंडीशंस. these are the most common conditions. Of course out of box भी कुछ हो सकता है, लेकिन these are the lifestyle diseases which are major health concern for most of people, and there is a single plausible explanation. सारी बीमारी का रीजन एक है. Now before starting this presentation, do you know this man, this person? I'm sure I will not bore you with history class, लेकिन still, does anyone recognize this person? Yes, Hippocrates. Hippocrates is known as father of modern medicine. जब ये उस टाइम का उसका ऑब्जर्वेशन है, जब मॉडर्न साइंस के पास ना माइक्रोस्कोप था, ना पेट स्कैन मशीन्स थे, ना एमआरआई था, ना साइंस इतना एडवांस था. एंड ही हैज कोटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दैट इज 80% of your disease begins in your gut. This was his observation, and now modern science is trying from left, right, and center कि हाँ, सारी प्रॉब्लम हमारी गट से स्टार्ट होती है. सो दिस इज योर गट स्टोरी. Dr. Avinash, the audio is not coming. Sorry. Let me share my screen with audio. Cases, by the way, with people who put on a lot of weight, it is inflammation. So they put me on a diet to get rid of the inflammation, elimination of inflammation, it's called. And it worked beautifully. The weight went like that because they eliminated foods that were not suiting me. Okay, so I'm sure you must have gone through this reel. Actually, this was sent by one of my clients only कि ये inflammation क्या है. And then I understood कि majority of people don't know और इसका चक्कर क्या है. So inflammation कुछ नया चीज नहीं है. Basically, it starts in your gut. So how this process begins, that is very important. So if we understand how, then उसको bend करके ठीक कैसे करना है, that is very easy. ठीक है.
सो वेन एवर वी ईट फूड, अ कैटेगरी ऑफ फूड इज नोन एज गुड फूड, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, वो हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में पास होता है, एंड दिस गट माइक्रोब्स दे प्ले अ मेजर रोल इन डाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिशन. So whenever we eat good food, they promote growth of good bacteria, and this good bacteria will in turn promote our good health. अब जब कुछ चीज गुड है तो उसका ऑपोजिट बैड भी होगा. सो जब हम लोग बैड फूड खाते हैं, again they goes to this gut bacteria, लेकिन they goes to a population which is known as bad bacteria, and this combination will release toxins in our system. सबसे पहले पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ पे टॉक्सिन्स ओरिजिन हुए वहीं पे, एंड दिस टॉक्सिन्स आर लाइक एसिड. जब हमारी स्किन के ऊपर एसिड का ड्रॉप पड़ता है तो इट यूजुअली इट द स्किन गेट्स बर्न. ठीक है, सिमिलरली ये टॉक्सिन्स होते हैं, ये हमारी गट वॉल की लाइनिंग को बर्न कर देता है. ठीक है, एंड दिस इज द स्टार्टिंग फेज ऑफ ऑल डिजीज. दिस कंडीशन विल क्रिएट लीकीनेस इन अवर गट. सो मदर नेचर ने जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, दैट विल बी इरोडेड बाय दिस टॉक्सिन्स, एंड ये टॉक्सिन्स हमारे सिस्टम का एक्सेस मिलता है, सर्टेन गट माइक्रोबायोम को एक्सेस मिलता है, एंड दिस कॉजेज लीकीनेस, एंड दिस लीकीनेस इन अवर गट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लामेशन. सो अभी सुना इन्फ्लामेशन क्या है, इन्फ्लामेशन क्या है. दिस इन्फ्लामेशन स्टार्ट्स इन योर गट. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द फूड विच वी ईट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन अवर गट हेल्थ. ठीक है, नाउ गट वॉल लीकी हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे मेडिकल साइंस वी विल अंडरस्टैंड वेरी क्विक. आई विल गो थ्रू दिस स्लाइड वेरी क्विकली. सो वहां से सारा जो टॉक्सिक मटेरियल है वो लिवर में ड्रेन होता है. नाउ लिवर इज द मास्टर मेटाबॉलिक ऑर्गन, एंड लिवर इज वेरी स्मार्ट. ठीक है, उसको पता चल गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूट गया है, नाउ आई हैव टू कम इनटू एक्शन. सो लिवर क्या करेगा, वो सारे टॉक्सिन्स को फैट के अंदर रैप कर देगा. इट विल कुशन आउट द टॉक्सिन्स, सो दैट वो टॉक्सिन्स आगे जाके हमारी बॉडी को डैमेज नहीं करे. और इस चक्कर में फैटी लीवर होता है. दिस फैटी लीवर इज फर्स्ट स्टेज ऑफ डिजीज. सो मेजोरिटी ऑफ केसेस में ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड, ओबेसिटी इज द लार्जेस्ट कंसर्न. सो ओबेसिटी में स्टार्टिंग पॉइंट इज फैटी लीवर. अब लीवर के अंदर फैट जमा है तो लीवर को काम करने में दिक्कत हो रही है. नाउ लीवर विल स्टार्ट थ्रोइंग दिस फैट इनटू सर्कुलेशन, और ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स में जाके ये फैट एक्यूमुलेट होता है, एंड दिस विल कॉज इंक्रीज इन वेट, बेली फैट बाहर आने लगेगा, एंड दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ डिजीज. नाउ यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ना कोई सिम्टम्स आएंगे, ना कोई आपके ब्लड रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी, और आपका वेट बढ़ता रहेगा. एज राजा रमन सेठ के उसने काफी सारी चीजें ट्राई की थी, लेकिन दे वर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स बिकॉज द रूट कॉज माइट बी, आप कर बहुत सारी चीजें रहे हो, लेकिन वो आपके रूट कॉज पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद ये लीकीनेस कंटिन्यूअस चालू रहता है ड्यू टू नॉट एड्रेसिंग प्रॉपरली रूट कॉज, या हैफेजार्ड वे में वी स्टार्ट मेकिंग चेंजेस, एंड दिस टॉक्सिन्स इवेंचुअली हमारा लीवर थक जाता है, एंड दिस टॉक्सिन्स विल गेट एक्सेस टू अवर सिस्टम, एंड दिस विल स्टार्ट कॉजिंग डैमेज टू आवर ऑर्गन्स. ठीक है, सबसे पहले एंडोक्राइन ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, फिर उसके बाद बाकी के सारे ऑर्गन्स. नाउ यू कैन इजीली कोरिलेट कि ये टॉक्सिन की इंजरी की वजह से यू गेट डिजीज. स्टेज 3 डिजीज का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इज, आपके रिपोर्ट्स भी एबनॉर्मल आएंगे, आपके ब्लड में इन्फ्लामेशन का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आएगा, यू माइट गेट प्री डायबिटीज, डायबिटीज, थायराइड, विजिबल हेयर फॉल, जॉइंट पेन. ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज दिस टॉक्सिन्स हैव नाउ स्टार्टेड ईटिंग अवे योर हेल्दी ऑर्गन्स. ठीक है, this is stage 3 of disease. Now at this point of time also, if we don't wake up, डायबिटीज तो हुआ है, एक मेटफॉर्मिन का गोली ले लिया क्या दिक्कत है, हाइपरटेंशन ही तो है, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले लिया क्या दिक्कत है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, एक एंटासिड पॉपअप पिल पॉपअप कर लिया. सो इफ वी डोंट एक्ट ऑन दिस स्टेज, देन वी लैंड अप इन स्टेज 4, एंड दैट इज नोन एज कॉम्प्लिकेशंस stage. So majority of lifestyle diseases evolve in this way. So we don't get one fine day हम लोग उठे and we feel के हाँ डायबिटीज हो गया, ऐसा नहीं होता है. जब आपका ब्लड में डायबिटीज डायग्नोज होता है तो यू आर ऑलरेडी इन स्टेज 3 ऑफ डिजीज.
सो मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो तो काफी एडवांस पॉइंट है. दिस वी ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड. नाउ द क्वेश्चन कम्स, ज्ञान तो सारा है, नॉलेज है, यूट्यूब गूगल सब पे है. सो हाउ टू करेक्ट दिस? लॉजिकली स्पीकिंग जो प्रॉब्लम है उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे तो इट इज वेरी इजी. सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज प्रिवेंशन ऑफ बैड फूड एंड inclusion of good food. And second approach is repairing the leakage in gut. जो पाइपलाइन में लीकेज हुआ है उसको हम लोग ठीक करेंगे तो गट के अंदर ज्यादा टॉक्सिन्स या इन्फ्लेमेशन नहीं होगा. Now, here I want to bring an important point. One size doesn't fit all. सबके अंदर इन्फ्लामेशन का रीजन अलग होता है, इन्फ्लामेशन का रेंज अलग होता है. सो यू नीड अ कस्टमाइज केटर्ड अप्रोच. लेकिन मोटा मोटा समटाइम्स गुड फूड वी ऑल नो, फ्रूट्स खाने, वेजिटेबल्स खाने, होल ग्रेन्स खाने, ड्राई फ्रूट खाने, चिया सीड्स लेना है, दैट वी ऑल नो. वो इन्फॉर्मेशन, देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. लेकिन समटाइम्स वी डोंट नो कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर पर्टिकुलरली इन बैड फूड. एंड हम लोग कई बार बैड फूड को गुड फूड समझ के खाते रहते हैं एंड वी आर स्ट्रगलिंग विद द रिजल्ट्स एंड वी आर स्टक विद द वेट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सेड दैट हेल्थ इज मेड इन किचन. ठीक है. सो व्हाट ऑल things comes under category of bad food that we need to determine and we have to rectify that accordingly. So first thing which I will like to bring your notice is cooking methods. ठीक है. Excess cooking oil, high temperature पे cooking, high pressure पे cooking, this all creates free radicals and inflammation in the cooked food which is getting access into our system. Again, utensils make a lot of uh, importance when it comes to food. So using aluminium, non-stick, plastics, these are not recommended. And उसके अंदर जो food cooked हुआ है, that is again it is bad food. And there are certain category of food in itself because of the quality which we are getting in nowadays. Again, it is a questionable. सबका अलग अलग होता है. And this is a very large topic which each point in itself is a point of discussion for 15 to 20 minutes. So get in touch with the person who has invited you. He might be a right person depending upon your health condition. He may guide you कि आपको इसमें क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है. And the other thing, other side of story is we have to repair the leakage. So repairing of leakage will include four main aspects. First is, of course, it is a lifestyle modification. So first is food and nutrition, exercise, stress, and sleep management. Obviously, if we work on all four aspects, then the leakiness in gut will decrease. Thereby, it will reduce your inflammation, and thereby we can get good health. Okay, so as we saw in live testimony also कि कई बार हम लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश करते हैं एंड वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट. सो इसके लिए फर्स्ट थिंग इज either you have to acquire the knowledge, जितना भी ये गड़बड़ है वो सबका knowledge, and second thing is you have to execute. So get in touch with the person if you want a detailed explanation of this. He might be a good person to explain each and every aspect. With this, I am ending my presentation. So I hope you have understood a little bit of inflammation today. Thank you very much.